Yeah, hi Renisha. Good evening. Hi, good evening. Can you see me? No, I can hear you. I'm not able. Uh, I'm getting the message you cannot start your video because the host has disabled it. I think she'll do it now. We will do it now. Yeah. Yeah, hi Rishi. Hi, आप ज्वाइन कर लिए ना? Renisha, I think you can try. You can switch on our video, I believe. Yeah. Yeah, hi. Yeah, Rishi, hi. I think you can switch on your video as well. Are you able to see me now? Yeah, we can see you. Yes. My video enablement has been. No, Oh, it's yeah. done now. Yeah. So good to see you, Renisha, after a long time. Yes, good to see you too. So you're in Ahmedabad or in Bombay? Yeah, I'm in Ahmedabad. Okay. Hi, Renisha, Rishi. Hi, Shri. So Shraddha, can we start? Yes, we'll start now. Hello, everyone. Thank you for joining in. So we have Rishi sir today, and also we have Ranisha ma'am with us. Hey, hi, Ranisha. Very warm welcome to our webinar. Hello, everyone. Hi. So before we get started, I'll quickly set some housekeeping rules so we have a smooth webinar and we can address everyone's queries. So we will spend the next 15 to 20 minutes discussing about everything that has been happening with gold and silver and the current market trends of commodities. And then we will spend the next 15 to 20 minutes dedicatedly taking questions on YouTube Live as well as Zoom. So, introducing our host for today, we have Dr. Ranisha with us. She has a rich experience of over 17 years and expertise in fundamental, technical, sentimental, and intermarket analysis.
She completed her doctorate on the topic of determinants of gold prices under different scenarios in August 22 and is also a certified independent director. She has been a prominent guest speaker on business news TV channels like CNBC TV 18, CNBC Awazi Business, and a lot more. So, welcome, Ranisha. So good to have you with us today. Over to you, Jay, sir. Yeah. Yeah. Thanks, Shraddha. And thanks, Ranisha. Thanks, Rishi, once again for being an integral part of our webinar. So just for the interest of the audience, I'll try to use English and Hindi both. We usually get a demand that, we don't do webinars in Hindi. So आप सभी का स्वागत है. आज का जो वेबिनार है वो हम लोगों ने स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशल रखा है. उसका रीजन भी है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों लाइफ टाइम हाइस पे हैं इंडियन मार्केट्स में और इसी वीकेंड पे अक्षय तृतीया है. सो अगर आप ट्रेडर नहीं भी हैं तो एज एन इंडियन एवरी हाउस होल्ड का ये बहुत एक इंक्विजिटिवनेस रहता है कि गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा, ये लाइफ टाइम हाई बना है, ये लाइफ टाइम हाई ऐसे ही कायम रहेगा आने वाले दिनों में या इसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी. एक ऑस्पिशियस बाइंग होता है अक्षय तृतीया के समय. उस समय भी एवरी हाउस होल्ड, हाउस वाइफ, सबका ये रहता है कि कुछ ना कुछ गोल्ड या ज्वेलरी खरीदा जाए. सो आज का सेशन इसलिए भी स्पेशल है कि हमें एक डायरेक्शन मिलेगा रेनिशा से कि गोल्ड एंड सिल्वर में हो क्या रहा है फंडामेंटली, टेक्निकली, एंड व्हाट्स द फ्यूचर आउटलुक. And she brings a lot of experience on the research side. वो bullion as a sector को अच्छा से समझती है, and the company which she is heading as head of research, that company is also into gold. And for Rishi, I think we all know Rishi has got such a rich experience. सिर्फ exchange side में ही नहीं, वो market side में भी equally efficient और expert हैं. तो ऑन एक्सचेंज साइड में किस तरह से गोल्ड सिल्वर में काम होता है, क्या रिस्क्स हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में भी हम लोग ऋषि से समझेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग अप क्वेश्चंस, रेनिशा, आई जस्ट लाइक टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट. हम लोगों ने गोल्ड में लाइफ टाइम हाइस बनते देखे, सिल्वर में एक अच्छा खासा बाइंग है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई बनता हुआ देखा. ऑलमोस्ट 76,000 क्रॉस हो गया प्राइस. दूसरी तरफ यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है बरकरार है. फेड का इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा. 3 मई को अगेन नेक्स्ट मीटिंग में एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे फिर से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे. तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि रिसेशन है, इक्विटीज मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड प्राइसेस ऊपर आएंगे. तो अमिड्स ऑल दिस एक रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर को यहाँ से क्या क्यूज लेने चाहिए? How do you see gold and silver prices for next 2-3 months and by rest for the next 1 year, and also your views on international commodities में क्या चल रहा है, gold silver prices में movement का क्या direction लग रहा है, base metals में क्या है? So your thoughts on it, we'll hand over it to you, Ranisha, for your comments. Thanks, Jay, for inviting me. मुझे लगता है कि जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर की जो ये अनस्टॉपेबल एक रन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम नवंबर मंथ, और जो सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट मिला है दिस हैज कम फ्रॉम द मार्च मंथ, जब हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस 55,000 से रन अप होके सीधा 60,000 की प्राइसेस को टच किया, 61,000 इनफैक्ट टच किया लास्ट वीक. तो ये 12% की रैली हमने ये पिछले 1-1.25 महीने में देखी. सिल्वर में हमने जो देखी रैली वो सबसे ज्यादा थी. इनफैक्ट $20 से लेके $26 आ गया. 30% का रनअप हमने सिल्वर में देखा. एंड इंडियन प्राइसेस में वो लगभग था 61,000 से 77,000. तो ये रनअप आया है. इस वजह से हमने देखा है कि काफी इंटरेस्ट गोल्ड सिल्वर में आया है. काफी फंड्स हैं जो अपना रीशफलिंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज को एंड अपने वेल्थ को, और गोल्ड सिल्वर में अपना थोड़ा ना थोड़ा डालना चाहते हैं अपना वेल्थ. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें क्योंकि अक्षय तृतीया आ रहा है. तो आई वुड टेल यू कि क्या फैक्टर्स है जिस वजह से ये इतना रनअप आया है. क्या हो गया अचानक से कि प्राइजेस में हमने देखा कि इतना बड़ा अनस्टॉपेबल रन आया, इतना स्पेक्टेकुलर रैली आई, और ये सस्टेनेबल है कि नहीं. तो पिछले 1-1.5 महीने में 3 चीजें हुई है.
फर्स्ट इज जो हम देखा है कि रिसेशन के कंसर्न्स हैं वो बढ़ गए हैं। वो कैसे बढ़े हैं? जब से ये बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हुए। और बैंकिंग क्राइसिस क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है कि फेड ने ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो हिस्टोरिकली देखा गया है जब भी इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इट इज फॉलोड बाय कैजुअलिटी और क्राइसिस और रिसेशन। आप पिछले 40-50 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा ऐसा हुआ है, व्हेनेवर द इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप इट हैज बीन फॉलोड बाय क्राइसिस। लास्ट में आपने .com क्राइसिस देखा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, डेट क्राइसिस। So we've seen all those things after interest rate run up only. तो अभी भी वही हुआ है। तो now it is कि अभी कुछ ना कुछ क्राइसिस आएंगे, बैंकिंग क्राइसिस ऑलरेडी स्टार्टेड, तो दिस कैन टर्न अप इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। सबको ये डर लगा हुआ है, रिसेशन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और रिसेशन कंसर्न्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो हम देख रहे हैं वो भी खराब आ रहा है। जो इतनी क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था फेड ने कोविड टाइम्स में, इतना मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि they pumped up so much of money, they printed so much of money, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। एंड आगे हम देख रहे हैं कि उसका फिर इम्पैक्ट पूरे के पूरे हर सेक्टर में आ रहा है। तो रिसेशन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे नंबर 1 फैक्टर है। सेकेंड है जो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अपना पैसा जो रिजर्व में रखती हैं तो वो अलग अलग करेंसीज में, कमोडिटीज में अपने रिजर्व्स में रखती हैं। जैसे ओवरऑल आप एवरेज देखेंगे तो 60% जो रिजर्व्स है सेंट्रल बैंक के वो डॉलर्स में है, 15% इट इज यूरो, 15 to 20% other currencies, and only 4 to 5% gold. So what central banks are thinking like कि डॉलर की वैल्यू इतनी कम हो जा रही है, बार बार कुछ ना कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं। पिछले 100 सालों से यूएस हैज बीन अ डोमिनेंट प्लेयर कि जो जिसकी करेंसी हर जगह चल रही है, इट हैज बीन अ रिजर्व करेंसी। बट अब ग्रेजुअली डी डॉलराइजेशन हो रहा है कि सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग आउट ऑफ डॉलर एंड पुटिंग अदर करेंसीज एंड कमोडिटीज इन देयर रिजर्व्स। एंड सबसे बड़ा जो सेफ हेवन जो चीज है वो है गोल्ड। सो जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो तो हमारे पास 6 to 7% रिजर्व्स है वो गोल्ड में है। अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज उनके पास भी बहुत कम रिजर्व्स है। तो दे आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व्स एंड टेकिंग डॉलर आउट। तो इस वजह से काफी चीजें फर्क पड़ रही है मार्केट में, बहुत ही अच्छी सेंट्रल बैंक डिमांड आ रही है। पिछले साल हमने देखा कि दे सेंट्रल बैंक्स बॉट अप टू मोर देन 1100 टन्स ऑफ गोल्ड। हर साल वो 600 से 700 टन बाय करती थी, पिछले साल इतना ज्यादा बाय किया बिकॉज उनकी दे वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम डॉलर एंड पुट देयर मनी इनटू अदर थिंग्स जो सेफ हो। तो उस वजह से भी गोल्ड की काफी अच्छी डिमांड आ रही है। एंड देन द लास्ट फैक्टर इज रीशफलिंग। जो इतने रिटर्न्स बढ़ते हैं तो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईटीएफ डिमांड काफी अच्छी आ रही है, सेंट्रल बैंक्स तो अच्छी थी ही डिमांड, ईटीएफ डिमांड, रिटेल डिमांड काफी अच्छी आ रही है, ट्रेडर्स काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हैव गिवन अ गुड रन अप एंड आई थिंक ये रन अप यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, आगे चल के ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट 2-3 months में आई थिंक वी वुड बी ट्रेडिंग अराउंड 62,000 to 62,500 फॉर गोल्ड एंड सिल्वर में मुझे लग रहा है 80,000 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड होनी चाहिए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लग रहा है कि हम एक रिसेशन में आ चुके होंगे, तब तक कंसर्न्स और बढ़ गए होंगे। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है कि मेरे टारगेट्स गोल्ड में जो है मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है 70,000 तक के प्राइसेस देखे जा सकते हैं एंड सिल्वर में इवन आई थिंक 90,000 could be seen. So I'm expecting at least 20% upside in gold and silver in both from this current level. So this is very good opportunity. जिसने अभी भी बाय नहीं किया है वो अभी भी बाय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे जहाँ पे बाय करना चाहिए। एंड आप पिछले साल के अक्षय तृतीया से देखेंगे तो 20% रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। एंड पिछले 20 सालों से देखेंगे तो अक्षय तृतीया पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। 20 सालों में सिर्फ 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं, बाकी हर बार पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। एंड एवरेज जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो एक रिटर्न होता है, सीएजीआर रिटर्न, हर साल आपको एवरेज रिटर्न कितना मिलता है तो वो है 12%। तो 12% आपका कंफर्म रिटर्न बनता ही बनता है अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज एवरीवन किसी भी मेथड से आप बाय कीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर अपना पैसा डालिए।
Yeah, thanks, Ranisha. So, would like to bring in Rishi here. Rishi, देखिए, I understand आप exchange side से हो, so you don't have a view on prices. लेकिन इस बार अक्षय तृतीया में अक्षय तृतीया सैटरडे को हो रहा है. So, exchange के क्या plans हैं? Are the trading के कोई chances रहेंगे या Friday को ही जिन्हें लेना है अक्षय तृतीया के auspicious time पे, they should buy on Fridays only? और आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है और जिस हिसाब से रिसेशनरी सिचुएशंस बन रहे हैं, हाउ यू सी गोल्ड प्राइसेस, नॉट फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन करंट भाव में व्हाट्स द जो पार्टिसिपेशन है उनका एक्सचेंज में, वॉल्यूम्स किस तरह बढ़ा है, डिलीवरी ज्यादा हो रहा है या नहीं? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. धन्यवाद जय, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू. जहां तक सोने और चांदी का सवाल है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ गुण होते हैं सोने चांदी में इन्वेस्ट करने के, इसीलिए हमारे पूर्वज भी इन्वेस्ट करते आए हैं सोने चांदी में. और ये कोई एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट सिर्फ नहीं है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो है ही, बट उसमें एक लॉजिक भी है. बिकॉज गोल्ड इज एक्चुअली द रियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बाकी तो जो जो करेंसीज हैं वो सब effectively they are how do you say, promissory notes, in the sense that they are issued by governments, and to back them maybe they're based on deficit financing. So to back them maybe जितना नोट छप रहा है दुनिया में उसके हिसाब से उतना गोल्ड बैकिंग नहीं है करेंसीज का. So effectively the value of gold would go up if someone is printing more and more money. तो जो इन्फ्लेशन होता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड gold will reflect that inflation in the sense that whenever you see inflationary situation you will see that gold price going up. Secondly, जो आप देख रहे हैं कि जो करेंसी वॉलेटिलिटी होती है उसमें भी अगर रुपी वीक होती है तो गोल्ड जो एक इंटरनेशनली रेफरेंस्ड कमोडिटी है, तो उसमें अगर गोल्ड का भाव बरकरार भी रहता है इंटरनेशनली पिछले महीने और इस महीने में, और समझिए रुपी 81.5 से 82 हो गया या कुछ वैसा हो गया, तो आपको दिखेगा कि उतना परसेंटेज मूवमेंट गोल्ड इंडिया में बढ़ गया. तो आपको एक इनबिल्ट करेंसी हेज भी मिलता है. हैविंग सेड दैट, देखिए सबसे पहली बात तो मैं कैविएट देना चाहता हूँ कि मैं एक्सचेंज से हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें अपने रिसर्च पे करें, या कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या जो भी आपके लोग हैं जो आपको एडवाइस करते हैं प्रॉपरली, उनके एडवाइस पे करें जो सेबी रजिस्टर्ड हों, और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करें. और ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइस व्यू के साथ एक्सचेंज का कोई सरोकार नहीं है. एक्सचेंज यही बता सकता है आपको कि जो गोल्ड और सिल्वर में ऑफ लेट पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है, एंड अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर के ऑप्शंस भी, कल सिल्वर में ऑल टाइम हाई ऑप्शंस की टर्नओवर हुई थी, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर्स में भी है. और जहां तक अक्षय तृतीया का सवाल है, तो हमारे पास गोल्ड में 1 किलो, 100 ग्राम, 8 ग्राम और 1 ग्राम सारे चारों कॉन्ट्रैक्ट हैं. सिल्वर में भी 30 किलो, 5 किलो और 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो आप यदि निवेश करना चाहते हैं सोने चांदी में तो अक्षय तृतीया के मौके पे तो शुक्रवार रात को भी आप ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट फ्राइडे को खुला है, एंड आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि सोने चांदी में हमने अब, सोने में खासकर हमने डोर स्टेप डिलीवरी भी चालू की एक्सचेंज में. तो आप अगर एसआईपी के माध्यम से उसको डीमैट में अक्यूमुलेट करते हैं और फिर उसको अपने घर पे डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी आ सकता है. डिलीवरी का कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 1 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है, प्लस उसमें थोड़े बहुत जो भी एडिशनल कॉस्ट आएंगे, बट मिनिमम एक चार्ज है 1250 रुपए का. तो इसीलिए अगर आप कुछ 1 ग्राम या 2 ग्राम करेंगे तो हो सकता है आपको वाइबल नहीं पड़े, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अक्यूमुलेट करें महीने दर महीने तो फिर आप उसको डिलीवरी लेना चाहें तो शायद आपके लिए लाभदायक हो. तो आप फिजिकल में भी ले सकते हैं, डीमैट में भी ले सकते हैं, और डीमैट में लेने के बाद बेच भी सकते हैं. तो गोल्ड में जो मैंने जो कहा कि एक इन्फ्लेशन हेज का जो नेचर है वो बहुत ही बढ़िया नेचर है गोल्ड का. और जैसे जैसे आगे अनसर्टेनिटी, एक और चीज है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, वॉर्स होती है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर गोल्ड का वैल्यू और बढ़ जाता है, क्योंकि जो करेंसी में लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता है या जो करेंसी में भय लगता है, तो गोल्ड में लोगों को
आश्रय मिलता है, इट इज अ सेफ हेवन डिमांड फॉर गोल्ड. तो इसीलिए पीपल मूव मोर टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी. एंड सिल्वर में क्या एडवांटेज है कि सिल्वर इज नॉट ओनली अ प्रेशियस मेटल बट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल. तो आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है तो भी सिल्वर लाभदायक हो सकता है, और एक प्रेशियस मेटल की तरह से भी आपको लाभदायक हो सकता है. तो सिल्वर में दोनों क्वालिटीज है, जबकि गोल्ड में एक सेफ हेवन या प्रेशियस मेटल का क्वालिटी है. तो गोल्ड सिल्वर में भी एक पोर्टफोलियो का एक प्रतिशत आपका प्रेशियस मेटल्स में भी होना चाहिए. अब कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 15%. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर risk profile and time horizon, but definitely you should have an exposure to commodities and also bullion in your portfolio to a certain extent. And वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ सकते हैं, या आप अपने हिसाब से एक निर्णय ले सकते हैं. Thank you, Rishi. Thank you so much for your inputs. So I think हम अब question answer के लिए floor open करते हैं. So Shraddha, can you please start putting questions here so that we can get the responses from Rishi or Rishi. So we start taking the questions. So the first question is from Mr. Hanish. He's asking, is natural gas a buy now? So Renisha, I hope you track or a little bit if you can share your views, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा बहुत अच्छा खासा एक 8.5% का रैली देखने को मिला था. Sorry, किस commodity में बात हो रही है? I didn't get it. Natural gas. So the viewer is asking कि is it a buy now? So I think natural gas में it is mainly dependent on weather. तो हमने देखा है कितनी अच्छी रैली आई है एंड फाइनली ब्रेकआउट देखा गया है नेचुरल गैस में. यस आई थिंक यहाँ पे बाइंग करना चाहिए ओवरऑल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से 4 to 5% का अपसाइड और भी बाकी है. एंड थोड़ा थोड़ा डिप से बाय कीजिए. 50% एट करंट प्राइसेस, 50% थोड़ा नीचे मिलता है यहाँ पे तो बाय कीजिए. एंड 4 to 5% तक की रैली मुझे और भी दिख रही है यहाँ से नेचुरल गैस में. ओके. सो ऋषि, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा. अभी नेचुरल गैस देखिए काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है. ओके. और रिसेंटली एमसीएक्स ने मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च किया है. सो एज रेनिशा इज मेंशनिंग कि अगर करंट लेवल पे बाई करना है और 50% थोड़ा नीचे जाए तो बाई करना है. सो इसके लिए एक बेहतर विकल्प ये अवेलेबल है कि आज नेचुरल गैस जो 1250 का जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है, आज मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स 250 लॉट साइज में अवेलेबल है. सो अगर आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करना है तो नेचुरल गैस मिनी बिकम्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर यू. और इसके अलावा ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद है. अगर आप लिमिटेड कैपिटल से अगर एक्सपोजर लेना चाहते हैं कमोडिटीज में तो नेचुरल गैस मिनी कैन ऑल्सो हेल्प. अगर व्यू बुलिश है जैसा रेनिशा बता रही है तो यू कैन ऑल्सो बाई कॉल ऑप्शन. तो ऋषि, आई लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी किस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी है नेचुरल गैस ऑप्शंस में, और मिनी में यहाँ पे किस तरह से लिक्विडिटी है. तो आप कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? जय, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक किया हुआ है. श्रद्धा, कैन यू प्लीज चेक दैट प्लीज? या श्योर. जहाँ तक मिनीज का सवाल है, नेचुरल गैस के मिनीज भी काफी लिक्विड हैं, और उसके अलावा नेचुरल गैस के फ्यूचर्स भी बहुत लिक्विड हैं. मिनीज और ऑप्शंस भी लिक्विड है. तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेचुरल गैस में काफी लिक्विड है. तो कोई अगर एक्सपोजर लेना चाहे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने एपिटाइट के हिसाब से, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोजर ले सकता है. ओके, थैंक यू. So you can take next question, Shraddha. Yes. So the next question is, how much capital is required for option buying in Bank Nifty? Although this is a little bit off track. So I think it depends on what strike price you select. Say if you select very out of money or deep or far out of money contracts, so your premium will be lower. But again, there will be a liquidity issue. So आपका कैपिटल प्लस रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देख के आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि आपका व्यू क्या है. अगर आपका व्यू बेरिश है सो पुट बाइंग पुट कैन हेल्प, और व्यू बुलिश है तो कॉल कैन हेल्प.
but again, you take advice from whoever is your financial advisor and can trade on our platform. या फिर अगर आप technical analysis use करते हैं, so you have trading view and other charting options available on our app जो आप देख के you can create your own views. The next question is from Mr. Rahul. He is asking, is the current geopolitical scenario suitable for a bull run in natural gas? So Renisha, I would like to take this. Yeah, I would say my video is off. Please switch it on. You can switch it on now, Renisha. Yeah. So the thing is, I don't think geopolitical tensions impact natural gas's prices much. But crude oil and gold पे ज़्यादा impact आता है geopolitical tensions पर और इन सब बातों पर. So weather is the main thing. US UK में किस तरह से weather है वो ज़्यादा prices को impact करता है. As I said, अभी भी यहाँ पे run up बाकी है because weather has changed in UK and US. So हम यहाँ से अभी भी buying कर सकते हैं. And as I said कि 4 to 5% की upside rally अभी भी दिख रही है मुझे. So the next question is from Mr. Aditya. He's asking what affects crude market and how to decide when to buy it. So Renisha, again for you. Yeah, crude market. Yeah. Yeah, so basically crude is impacted by the demand and supply. So demand में जब भी हम देखते हैं कि थोड़ा नीचे ऊपर होता है, prices impact होती है. Supply shortages का सबसे बड़ा problem होता है. And supply shortages कहाँ से आती है? जब कोई tensions होते हैं supplying nation से. तो मेन जो सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल के लिए वो है सप्लाई. वो ओपेक से अगर सप्लाई कम होता है या फिर जो सप्लाई नेशन से कम होता है वो प्राइसेस को बहुत ही जल्द इम्पैक्ट करता है. एंड सेकंड फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स इज द डॉलर इंडेक्स. जो डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार वन वे डाउनसाइड चल रहा है. तो उस वजह से बुलिशनेस आ रही है क्रूड is dollar denominated commodity, and weather conditions is also impacting the prices. So these are the three factors that impact overall. तो मुझे लगता है कि जब तक $85 के नीचे है क्रूड ऑयल तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा. मैं नॉर्मल WTI क्रूड ऑयल की बात कर रही हूँ. $85 से ऊपर जब ये क्लियर होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट कैन गो अप टू इनफैक्ट $100 बिकॉज डॉलर में काफी वीकनेस लग रही है यहाँ से. तो बाय ऑन टिप्स का व्यू रखें क्रूड में. Yeah, just to add what Renisha is saying, दो तीन चीज और ध्यान रखना चाहिए. एक तो इन्वेंट्री लेवल. You also need to check यहाँ पे से अभी विंटर्स नहीं है यूएस में, तो साइक्लोन सीजन का आपको ध्यान रखना है. और प्राइमरी रीजन मूवमेंट का है, देखिए प्रोडक्शन लेवल्स और यहाँ पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस. अगर आज कोई ओपेक कंट्री कहता है कि मैं आज यहाँ प्रोडक्शन कट करूंगा तो यू विल सी अ रैली इन प्राइसेस. अगेन जियोपॉलिटिकल प्लेज अ वेरी मेजर रोल. If today you hear maybe like something wrong with Iran and any other country in Middle East, you will see prices rallying. So you need to keep a close watch on that. Economic data भी कुछ हद तक यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है. अगर रिसेशन की बातें होती हैं तो यहाँ पे क्रूड प्राइसेस गेट्स इम्पैक्टेड नेगेटिवली, बिकॉज अगर रिसेशन है तो यहाँ पे स्लो डाउन होगा इकोनॉमी में और क्रूड का डिमांड यहाँ पे गिरता है. So these are the few factors you should watch on the fundamental side. लेकिन अगेन यहाँ पे आप अगर ट्रेडर हैं तो फंडामेंटल के साथ आपको टेक्निकल्स में भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल्स आपको वो लेवल्स दिखाता है कि कहाँ पे आप एंट्री करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए. So the next question is from Mr. Jitu. He's asking the view on gold and silver. Like, is it a good time to buy as dollar index is getting support around 100 levels and gold is taking resistance around 2050 and silver resistance is around 26? Yeah, so I would say here, yes, dollar index is getting a strong support around 100 to 101 levels. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2-3 महीने पहले डॉलर इंडेक्स की वैल्यू थी 114. तो ऑलरेडी ये 13 to 14% यहाँ से फॉल हो चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. बट आई थिंक जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा यूएस का दिन ब दिन खराब आता जा रहा है, हमने देखा है कि
ज्यादा से ज्यादा डेट ऐड हो रहा है उनकी बैलेंस शीट में. यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, सर्विस पीएमआई नंबर्स आर ड्रॉपिंग वेरी फास्ट. दे आर बिलो 50 नाउ. एंड फिर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी है, वो भी डेंजरसली लो लेवल्स पर है, below 45. And जो recent जो wave of layoffs चल रहा है यूएस में, this is also very bad. तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेटा है ये बहुत खराब है. इस वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में इतनी गिरावट आई है. आई थिंक अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो 96 तक भी डॉलर इंडेक्स जा सकता है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगा. As you said, yes, $2,050 and $26 is facing acting as a strong resistance. एक बार ये क्लियर होते हैं लेवल्स, तो आई एम लुकिंग कि उधर से $2,100 जा सकता है. गोल्ड एंड सिल्वर $27 भी जा सकता है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक. तो बाय ऑन टिप्स का व्यू रखना चाहिए. एंड मुझे लगता है कि ये लेवल के ब्रेक पे भी आप बाय कर सकते हैं, और नीचे में अगर आपको गोल्ड 2000 के आसपास मिलता है, डॉलर्स के आसपास, तभी भी बाय कर सकते हैं. मतलब 60,000 के आसपास अगर इंडियन रुपीस में मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं. तो दोनों तरफ से ओवरऑल व्यू बाय का ही रहेगा, क्योंकि प्राइस नीचे भी सस्टेन नहीं हो रही है. इतना रनअप आया है तो एक करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे से बहुत अच्छी बॉटम फिशिंग हो रही है, बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, एंड प्राइसेस आर नॉट एबल टू सस्टेन एट लोअर लेवल्स. तो हर डिप्स पे बाइंग की एडवाइस रहेगी, या फिर जो सेफ खेलना चाहते हैं वो $2,050 के ब्रेक पर बाय कर सकते हैं, और सिल्वर में $26 के ब्रेक पे बाय कर सकते हैं. So the next question is from Mr. Sarthak. He's asking, what are the chances of gold increasing further as recession is about to come in the US in mid-June? Will we see the rally in gold? Yes, I've already told this that recession concerns are rising every day. एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स. So it has predicted the previous recessions. जो पिछले 8-10 recessions आए हैं यूएस में, हर बार वो प्रिडिक्ट करता है, और जब भी वो जीरो की लेवल के नीचे जाता है हम देखते हैं कि रिसेशन कंसर्न्स बढ़ते ही हैं, और अभी वो -5 के आसपास है. तो it is very much evident that we are going to see recession in this year. एक तो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स बता रहा है, बाकी जैसे इकोनॉमिक डेटा के बारे में मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पीएमआई नंबर्स, जो डेट है यूएस का वो बढ़ता जा रहा है, उनकी बैलेंस शीट है वो ग्रो होती जा रही है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 130% है, इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं तो उस वजह से ओवरऑल क्राइसिस होने के चांसेस है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि रिसेशन इज एविडेंट. इनफैक्ट जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी टॉप आउट हो चुकी है. 10-year ट्रेजरी यील्ड 4.5% थी 2-3 महीने पहले, अभी गिर के 3.5% हो चुकी है. तो जो हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो, अभी मई मंथ में एक राइज आएगा, एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसके बाद I don't think कि यहाँ पे सस्टेन रहेंगे इंटरेस्ट रेट्स. 5% के ऊपर यूएस में इंटरेस्ट रेट सस्टेन रहना बहुत डिफिकल्ट है. मुझे लगता है कि यहाँ से एक इंटरेस्ट रेट कट भी आना स्टार्ट हो जाएगा इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. तो जब रिसेशन कंसर्न्स बढ़ेंगे तो ये सब होगा. एंड अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो रिसेशन, जो प्री रिसेशन पीरियड होता है जो अभी है 2023 में, तभी गोल्ड हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है. हर तरह के सिनारियोस देखें आप, जो भी अलग अलग तरह के सिनारियोस होते हैं, बट जो प्री रिसेशन सिनारियो होता है वो गोल्ड के लिए सबसे बेस्ट बुलिश फैक्टर होता है. एंड उसमें हमने देखा है कि 15% से 50% जितनी प्राइसेस गोल्ड की बढ़ती है जब भी रिसेशन आने वाला है होता है. तो हमने ऑलरेडी 10% ऑफ प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा है फ्रॉम जैन टू मार्च. अभी यहाँ से 15 से 20% मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और भी प्राइसेस बढ़ सकती है. तो मतलब अगर 70,000 इंडिया में आ जाए प्राइस तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिसेशन, प्री रिसेशन जो फेज है वो बहुत ही बुलिश होता है गोल्ड के लिए. अभी भी यहाँ से काफी जगह बाकी है, और नंबर जैसे जैसे खराब आते जाएंगे वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ती रहेंगी. So the next question is from Mr. Baljit. He is asking for some guidance on how to buy gold mini contracts and what's the minimum amount required. So Rishi, your inputs will be helpful here. Yes, Shraddha, again my video is stuck. Let me just fix it. You can switch on your video now. Yeah, okay.
So the gold, as I said, we have 4 contracts in gold: 1 kg, 100 grams, 8 grams, and 1 gram. The 1 gram is called gold petal, 8 grams is gold guinea, then 100 grams is gold mini, and 1 kg is gold large contract. You can buy any of these contracts or sell any of these contracts on the exchange platform through your registered broker. You will need to pay the requisite margin on these contracts, and the margin keeps changing according to the volatility, roughly around 9-10%. And then you can buy these contracts. If you want to take delivery, you have to wait for the micro and uh, the smaller contracts. It's a monthly deliverable contract. The larger contract is a bi-monthly contract. And you can, if you are there in the end of the contract, you can be marked delivery, and then you will have to take delivery. Delivery will come in demat mode, and then if you want, you can convert it into physical and take physical delivery. The delivery center for the larger contract is Ahmedabad, and for the petal, etc., is from Bombay. So you can take the delivery. And as I also said earlier, we have a doorstep delivery at an extra cost, which will allow you to get the gold delivered to your doorstep wherever you are in the country. So the next question is, how does mining and production of gold and silver impact their prices in the commodity market? So, Rishi, Renisha, anyone? Yeah, so the mining cost for gold and silver is important, but not that important, I would say, because अभी जो gold की mining cost है वो है around $1,200. It is always looked at कि क्या mining cost है, क्योंकि mining cost सिर्फ नहीं देखनी होती, उसके बाद कोई भी mine चलाने के लिए all in all sustainable cost है वो देखी जाती है. तो $1,200 के नीचे अगर प्राइसेस जाएगी तो सारी माइंस बंद हो जाएंगी. तो ये इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट दिस डजंट डिटरमाइन द प्राइसेस. जो प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर्स अलग हैं. तो आई वुड से $1,200 इज फॉर गोल्ड एंड फॉर सिल्वर इट इज अराउंड $12. तो ये दोनों ऑल इन ऑल माइनिंग प्लस सस्टेनिंग कॉस्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, बट इट डजंट इम्पैक्ट द प्राइसेस मच. The next question is, what are the most significant factors that influence gold and silver prices in the short term? So according to me, there are mostly 5 factors that impact the prices. One is dollar index. वो सबको पता है कि उसके साथ inverse correlation है gold and silver का. Second is जो हमें देखना चाहिए वो है डिमांड, ETF डिमांड और सेंट्रल बैंक डिमांड. ETF डिमांड आपको पता चलेगा कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज कितने हो रहे हैं. वो एक वेबसाइट है exchangetradedgold.com, यहाँ से आप देख सकते हैं. डॉलर इंडेक्स की वैल्यू आपको देखनी हो तो वो आप investing.com से देख सकते हैं. ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. तीसरा है कि यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स, मतलब वो हमें बताती है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो ट्रेजरी यील्ड्स अगर घटती है तो प्राइसेस बढ़ेगी. तो वो भी आप investing.com से देख सकते हैं. तो हमेशा ये 3 फैक्टर्स ज्यादा देखे जाते हैं. और फिर काफी दूसरे भी फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में जैसे इन्फ्लेशन का नंबर काफी इंपॉर्टेंट है. उससे पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे चल के किस डायरेक्शन में रहेंगे. फेड के जब इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस होते हैं तो उसके मिनट्स क्या आगे चलकर सिनारियो रहेगा, किस तरह से उनका स्टांस है, मॉनेटरी स्टांस टाइटनिंग का है, हॉकिश है, डॉविश है, तो मिनट्स देखे जाते हैं. और सबसे बड़ा दूसरा भी फैक्टर है जो है यूएस का लेबर मार्केट. अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो रिलीज होती है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो ये 5-6 चीजें हैं जो प्राइसेस को बहुत इम्पैक्ट करती है शॉर्ट टर्म में. व्हेनेवर दे आर रिलीज, जब भी वो आज अगर डेटा है तो वो आज भी इम्पैक्ट करेगा प्राइसेस को, और उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म भी प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा. तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये मेन 5-6 चीजें हैं जो देखनी चाहिए. So the next question is from Mr. Diganta. He's asking, will prices of crude rise considering recent OPEC production cut?
I think that is already priced in. ये जो news है OPEC production cut का already priced in हो चुका है. Crude oil is now waiting for another kick or another factor जिसकी वजह से prices $85 के ऊपर sustain हो. So once the prices are sustaining above $85, बहुत अच्छी rally आ सकती है. So wait for that breakout and then you can enter a buy position. So the next question is, what is the role of gold and silver as a hedge against inflation, and how can traders take advantage of this in the commodity market? Very simply, as I said earlier also, gold, what is inflation? Inflation is the rising cost of goods and services. Now, goods में आपके जितने commodities है सब आ जाते हैं, including gold and silver. तो जब इन्फ्लेशन होता है या महंगाई बढ़ती है तो आपको कमोडिटीज में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट मैच इन्फ्लेशन इफ नॉट बीट इन्फ्लेशन एंड चांसेस आर दैट यू विल आल्सो बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन. तो इसीलिए कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक थोड़ा इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाता है. तो जब गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे वी सेड दैट गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ रियल स्टोर ऑफ वैल्यू. तो उस हिसाब से जब भी इन्फ्लेशन होती है तो आपको जितना इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के भी आपको देखेंगे कि दाम बढ़ते हैं. और अनसर्टेनिटी जब होती है, इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी होती है या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो उसमें और भी इनमें निवेश के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं. Thanks, Rishi. Renisha, if you have to share anything, एक trader के लिए how they can take advantage of inflationary situation. So historically, it is seen that whenever there has been a period of high inflation, gold has got a support, and it is always talked as a inflation hedge. In fact, not only inflation hedge, gold को हम काफी properties देते हैं, जैसे it is an inflation hedge. It is hedge against uncertain times. It is hedge against interest rate rise. It is hedge against currency. So it is hedge against many things. But जब भी inflation बढ़ता है तो gold की prices हमने देखा है कि बढ़ती है. But this did not happen last year. काफी लोग ये agree करेंगे कि 2022 में जब inflation इतना बढ़ा था तो तब क्यों नहीं gold की prices बढ़ी? That time it was not at high level. तो उसका सबसे बड़ा main reason था last time जो last year inflation इतना high था. जो सबसे बड़ा फैक्टर तब प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहा था वो था कि इन्फ्लेशन हाई था तो उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा था. तो एज गोल्ड इज कंसिडर्ड एज हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइज, तो तब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो गोल्ड की प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी, बिकॉज तब क्या हो रहा था कि लोग डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और यूएस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, यूएस के बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे. तो जो बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं दैट मैटर्स. हम छोटे प्लेयर्स जो है रिटेल प्लेयर्स किस तरह मार्केट को नहीं चलाते, जो बड़े प्लेयर्स हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स चलाते हैं. तो जो लास्ट ईयर का सीन था वो ये था कि इन्फ्लेशन तो ज्यादा था बट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा था. तो यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है उसमें काफी तेजी थी. इस वजह से ऑल बिग मनी वाज गोइंग इनटू दैट मार्केट एंड वाज स्विचिंग फ्रॉम गोल्ड. बट नवंबर दिसंबर में हमने देखा ग्रेजुअली इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ने लगी. तो फिर एज गोल्ड इज कंसीडर्ड एज हेज अगेंस्ट बैड टाइम्स, अनसर्टेन टाइम्स, रिसेशन का धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, तो फिर वापस हमने देखा कि फ्लोज आर नाउ अगेन कमिंग टू गोल्ड. तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो गोल्ड को प्ले करने हैं, नॉट इवन इन्फ्लेशन हेज सिर्फ, बट उसके साथ इंटरेस्ट रेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इन अनसर्टेन टाइम्स. तो इट डिपेंड्स क्या सिचुएशन है उस तरह गोल्ड परफॉर्म करता है. Yeah, thanks, Manisha. So the next question is from Mr. Manish. He's asking, how can I have a commodity portfolio? So Rishi would like to share your views. Yeah, sure. See, whenever you so first of all, let's talk about portfolio asset allocation within your portfolio. So normally when you create your portfolio, you'll have 4 or 5 generic asset classes which you can add to your portfolio. So you can have equities, you can have commodities, you can have fixed income instruments, you can have real estate, and maybe insurance as well, and maybe some other alternative asset classes. But generically, there'll be only 4 or 5 asset classes which you can add to your portfolio. Now, depending on your risk profile and time horizon, you can allocate certain percentages to each portfolio depending on the volatility and your ability to bear that volatility and how soon you need your money.
Then if you decide to allocate whatever percentage to commodities, then ideally within that you can decide which commodities you want to have an exposure to, depending on whether you are creating a strategic portfolio or a tactical portfolio. A strategic portfolio will be a longer term portfolio, a tactical portfolio will be a shorter term portfolio, or you can have a blend of both. Now, for example, if you're looking at economic recovery and economic boom, then you would be more focused towards base metals because they perform better when the economy is growing. On the other hand, if you're looking at geopolitical uncertainty or a recession, etc., you would be more focused towards bullion. And crude oil is also acts as a proxy either ways. So when there's geopolitical uncertainty, etc., crude oil goes up, or when there's a bump in economic activity, then also crude oil goes up. And if there is a recession, chances of crude oil also keep coming down because naturally the consumption would slow down. That is the classical theory. However, it may or may not hold true in real life, but this is what is there overall in the long run. Also to bear in mind is that commodities are counter-cyclical to equities and bonds. So whenever equities and bonds don't do so well, commodities do better and vice versa. So you will also have an inherent intra-portfolio diversification if you add commodities to your portfolio. So whatever percentage you choose, you decide among the relative asset classes, whether it's base metal, bullion, or energy, and then you can add them. And if you're extremely short term, you can also look at agriculture. Yeah, thanks, Rishi. So the next question is from, just a second. Yeah, so the next question is from Mr. Arvind, is asking that how do we start trading in commodities, because so far he's just been trading in Nifty and Bank Nifty and he wants to get started with commodity trading. So the best way to start, frankly, there's not much difference in the way the trading happens or the norms which are there. We are all stock exchanges, whether it's the equity exchanges or the commodity segments or whatever. And we are all governed under SEBI, regulated by SEBI. And all the exchanges have more or less similar norms. And like you approach your broker to trade Nifty, Bank Nifty, or whatever you are trading in, similarly, you can approach your broker to trade commodities. Having said that, whenever you trade, please ensure that you have adequate knowledge of what you are trading before you enter trading. And if you want to test waters, start with a smaller mini contracts or start with buying options so that your loss is limited while your chances of gain can be more. And once you understand the markets, you have experience, then you can increase your exposure to maybe larger contracts, etc. The next question is from Mr. Sunil. He's asking, what will be the impact of Fed rate hike on gold and silver? So, Renisha, please. Fed is going to rate hike in May month by 25 basis point, and ये already discount हो चुका है prices में, because एक indicator है जिसे बोलते हैं CME Fed watch tool, जिससे पता चलता है कि कितना rate hike की expectation है. So almost 80% probability है कि इस बार rate hike आएगा May month में, और ये prices में already discount हो चुका है, because जो शॉर्ट टर्म में जो फेड के हमने लास्ट मिनट्स देखे थे, उसमें फेड ने ये बताया था कि दे आर कंसर्न अपॉन द इकोनॉमी एंड उनको भी लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है, और जो ये रेट हाइक होगा ये लास्ट रेट हाइक होगा. इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो ज्यादा रेट हाइक्स आएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो रेट हाइक का इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी में काफी फैल रहा है, काफी सेक्टर्स है जिसको इम्पैक्ट हुआ है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कुछ इम्पैक्ट आएगा अभी रेट हाइक का, ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है. इनफैक्ट रेट हाइक के बाद हम देखेंगे प्राइसेस में एक रन अप भी आ सकता है, और क्योंकि उसके बाद एक पॉज रहेगा 2-3 महीने का, एंड फिर लास्ट क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकता है. तो आई डोंट सी मच इम्पैक्ट नाउ, इट इज ऑलरेडी डिस्काउंट. So we take one last question. So the question is, what are the major challenges and risks associated with investing in gold and silver in the commodity market?
The risks are a part of life. Risk will be there in any investment. And, whenever you invest in anything, you should be able to, you should be mentally prepared to look at the inherent risks and know the inherent risks before coming and investing in anything. So the biggest risk in any asset class which is traded is the volatility. So whether it is equity, commodities, currencies, interest rate futures, etc., whenever you approach a derivatives market, please understand that there will be volatility in the prices. If you do not like so much volatility, you can just take delivery. However, having said that, even if you take delivery, the prices will always keep moving up and down, although you may not have to pay mark-to-market margins. So the prices will always keep moving up and down. It is always in the long run that you benefit if you invest in something like gold or silver, where the prices in the long run will keep going up normally, which has been seen in the past. However, you have to be able to tolerate the interim volatility. Therefore, you should only take an exposure to the extent of your risk profile or what you can, of volatility you can absorb. So you should not get stressed about whatever risk or whatever type of exposure does not stress you out and is financially and emotionally feasible for you. You should only take that much exposure. Yeah. Thanks, Rishi. Yeah, Shraddha, just to add, what Rishi has said, there are a few things which, as a trader, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, whoever is, watching this webinar. First is when you are trading, you always try to trade that instrument जिसकी आपको समझ होती है. Okay, now Indian markets में देखें 2-3 साल पहले equity was a predominant trading asset class available, जहाँ पे liquidity बहुत था, participation बहुत था. But what has happened in last 2-3 years is commodities में बहुत अच्छा growth देखने को मिला है. Growth in terms of participation, in terms of new products, in terms of introduction of options. और यहाँ पे जो FPI को भी परमिशन मिला है, उससे ये लगता है कि इस सेगमेंट में मैच्योरिटी बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. ग्लोबली आप देखें, अगर आपको इक्विटीज मार्केट समझना है तो कमोडिटीज का समझ आपको हेल्प करता है अच्छा ट्रेडर बनने में. ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इन प्रीवियस वेबिनार्स व्हिच वी हैड. तो अगर आज के मार्केट में आप नए ट्रेडर हो तो आपको इक्विटी समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी लास्ट 3 इयर्स में नहीं देखने को मिला था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट वोलेटिलिटी. रीजन प्राइमरीली ये है कि यहाँ पे फंडामेंटल मैक्रोज अक्रॉस द ग्लोब हैज चेंज्ड. और जब मैक्रोज चेंज होते हैं तो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी चीज पे आता है, वो है कमोडिटीज, जो हम लोगों ने देखा है, राइट. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का डर है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो गोल्ड एंड सिल्वर लाइफ टाइम हाई बना रहा है. जब जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो क्रूड ऑयल हायर साइड में जाता है. हम लोगों ने $100 के ऊपर क्रूड कितने महीनों तक काम होता हुआ देखा. सिमिलरली व्हेन देयर इज डिमांड फॉर न्यू एज क्लीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सोलार पैनल्स से लेके आपका इन योर लिथियम बैटरीज बेस मेटल्स लगते हैं और सिल्वर लगता है. सो वी हैव सीन मूवमेंट देयर. अगर जो इक्विटीज में जो कंपनीज ट्रेड होते हैं, दीज आर ऑल a derivative of commodities or they are users of commodities. तो अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत तेजी है, या अगर ग्लोबल रिकवरी हो रहा है तो स्टील में बहुत तेजी आएगा, तो फर्स्ट rally will happen in the commodity itself, and the second order effect will go in the companies which are trading in that commodities. So अगर गोल्ड प्राइसेस में रैली है तो पहले तेजी आपको गोल्ड में दिखेगा, बाद में टाइटन में दिखेगा, राइट. सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड कमोडिटीज वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें. और आज पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं. आपके पास लोएस्ट कैपिटल विद से few thousand rupees आप ऑप्शंस में जाके अपना वाटर टेस्ट कर सकते हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल एसेट क्लासेस मेक्स यू अ बेटर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. एंड वी एट धन आर ऑलवेज फोकस्ड दैट वी वांट टू क्रिएट दैट नॉलेज बेस फॉर यू, so that आपको सिर्फ इक्विटी को छोड़ के अगर कमोडिटीज में समझना है, you can always refer these webinars
which are available on our YouTube channel of Dhan, जहाँ पे आप previous जो question answers हैं जो users ने अपना पूछा है उसे भी सुन के आप अपना doubt clarify कर सकते हैं. So with that, thank you so much, Renisha, for taking the time out, and Rishi for being a constant support on this webinar series. We look forward, for this kind of, more participation from users, so that we meet again next fortnight and we continue this series where we try to bring lot of, insights from experts like Renisha, and our users can benefit out of it. Thank you once again. Thank you, Shraddha, and over to you. Thank you, everyone. Thank you, Renisha. Thank you, Rishi, for joining in. Thank you. Just one last announcement. So we did get a lot of requests regarding custom strategy builder and commodity strategies. So a quick announcement. We are soon coming up with commodity strategies on our options trading platform called as Options Trader Web. The link for the same has been put down in the chat, both on YouTube and Zoom. So do check it out. Thank you, everyone. Thank you, Shraddha. Thank you, Renisha.